हेलो। ओके, सो देखो इसमें पहला स्टेप अपने क्या रहता है। जस्ट वन। Yeah. So first we need to go on the EVNG side, and if we search like EVNG-NG, so we need to go on the documentation and then go on the checkpoint. How to create image? So in this session we are doing for checkpoint. So आपको checkpoint में जाना, how to create and then checkpoint. And first approach to download the image from the checkpoint site. सो मैंने ऑलरेडी जो है इमेज को डाउनलोड कर लिया R81.10 गया फ्रेश इंस्टॉल। ओके। सो फर्स्ट स्टेप वी नीड टू क्रिएट वन डायरेक्टरी फॉर दिस नेम। सो नेमिंग कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरह से नेम नहीं देते हो, सीपी चेक पॉइंट एसजी सिक्योरिटी गेटवे डैश, इधर आप कुछ भी दे दो, बट इतना जो है करेक्ट होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द डायरेक्टली वी कैन से फोल्डर इन दिस पाथ ओपीटी यूनिट लैब एडॉन्स एंड क्यूमी, एंड उसमें जा करके सो आई एम जस्ट लेट मी लॉग इन आवर ईबीएनजी थ्रू CLI 192.168.137.100. Sorry. Let me increase the size. Okay, so we are doing for R18.10. So I'm just copying this command, and I will make it R18.10 here. Let me open Notepad. Make directory OPT unit lab add-ons QME, and our one is R81.10. So first we need to go on this directory CD and this directory. Before that, first create it. Okay. Let me log in through WinACP also. One 192.168.137.100. Username root, password EV. Okay. You need to go on the OPT, Unit Lab, add-ons, QME, and if you refresh it, already directory will be created R81.10. Okay. So first step is completed. Second one, we need to go on this path, and then with the help of WinACP or FileZilla, we need to copy your downloaded image, ISO image, uh, from your download folder to the our EVNG mentioned path. सो हम क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ विनिसी पे करेंगे। सो वी नीड टू गो ऑन द डैट डायरेक्टरी, तो हमने ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में है ओपीटी यूनिट लैब एडवांस क्यूमी, एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, इधर डाउनलोड में है मेरा सेक्शन, डाउनलोड में मैंने करके रखा है डाउनलोड चेक पॉइंट R81.10। चेक पॉइंट R81.10
I think it is in download section. Let me check. Yes, it is download section. Just 1 minute. Checkpoint. Yeah, this one. So we need to just copy from your download section to the abng this directory. And so once it will copy, then हमने जो भी इमेज को उसमें कॉपी किया है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा. जो भी हमारा इमेज है उसको चेंज करना पड़ेगा cd-rom.iso. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ evng, otherwise it will not work. So first step was create directory in the sim this part sorry path. Second, go on that path, copy your image with help of WinSCP or FileZilla. Third step is rename your image in for cd-rom.iso. So इसको हम कॉपी करके पहले रख लेते हैं नोटपैड पर. And our image is different. This is the RET.10 and our one is, let me just copy, rename, Control A, Control C. Okay, so first we need to go on the this partition, this path. Then we'll rename it. So once it will copy, so I think it will not take much time. And once rename it, then for a step is you need to create hard disk, HDD, hard disk drive for new checkpoint image. So we need to create new hard disk. So when we will try to start our checkpoint firewall, it is going to install all the things in this drive. So it is mandatory to create. In lab we can keep 80 GB is fine. Otherwise in production we should be like make sure how much space you are giving. But in lab environment it is fine for 80 GB. And then we'll create the new lab and then follow the install process. And then with the help of this step, we'll commit our changes. Commit means like for a permanent basis. So for commit, we need to like follow this process. So we'll see one by one. So at the moment we are on step number 2. So image has been copied. Now we need to rename. So for rename, we need to get that directory. So let me copy the command. Directory में जाएंगे and then run this command. And if you go on the WinSCP, if you want to see and visualize from WinSCP also, we can just refresh it. So now it is converted in cd-rom.iso. Okay. Now the next step is create hard disk for the newly checkpoint image. उसके लिए command है. We just need to copy and paste. We don't need to modify anything here. Okay. From here and refresh it. So now it is converting, and once it will be done, it will show here. Yeah, it is done. So at the moment we are not committing. So but hard disk is created for this name.
for 80 GB. Okay. Now fifth stage is create new lab. Add your newly created checkpoint image, connect it to Cloud Zero network. So let me just log in through our EVNG. Let me create a new lab. So it will be good. Checkpoint node. Just use checkpoint gateway. We are going to use R81.10, and I'm keeping all the things default like 6 GB RAM, 4 Ethernet, 4 CPU, 4 core CPU. And then we need to connect this firewall management interface to your Cloud Zero. So this is our management cloud, and it is connected with my Wi-Fi home Wi-Fi router इन शॉर्ट आई कैन टेल। तो ये इसका कनेक्टिविटी जो है हमारा जो है घर के वाईफाई से कैसे है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। इफ यू गो ऑन द VMware वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, सो हमने बहुत सारे यहाँ पर वीनेट क्रिएट करके रखा है। वीनेट जीरो ब्रिज, वीनेट जीरो में से डायरेक्टली हमारे जो वाईफाई के घर के वाईफाई का जो राउटर है ये डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। सो दिस इज फॉर एक्सटर्नल, मैं अपने लैब में इसको यूज करता हूँ इग्रेस इंटरफेस के लिए। एंड वीनेट 8 इज यूज फॉर आवर मैनेजमेंट पर्पस। सो इसको हमने नेट किया है, एंड इट्स सबनेट आईपी रेंज इज लाइक सबनेट आईपी इज 192.168.137.0/24 का है, एंड डीएचसीपी का इतने हैं, तो ये दिस इज द पूल ऑफ डीएचसीपी वी कैन से। ओके। और हमने क्या कर रखा है वीनेट 8 को, अगर आप यहाँ पर आओगे अपना ncpa.cpl, तो हमने क्या कर दिया है उसको वीनेट 8 को इसके साथ हमने शेयरिंग कर दिया है वीनेट 8 को। तो कैसे कनेक्टिविटी रहेगा, थोड़ा सा मैं इसको 2 मिनट में समझा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक। ऐसा रहेगा कि हमारा जो वीनेट 8 है ये है। सो जब भी हम इसको अभी कनेक्ट किया है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, इसका कैसा सीन रहेगा, ये जो है ट्रैफिक किसके पास जाएगा, वीनेट 8 के पास। और 8 को हमने किस में शेयर किया है, घर के वाईफाई के राउटर के साथ, घर घर के वाईफाई के साथ, होम होम वाईफाई। ठीक है। तो ये ट्रैफिक किसको देगा, ये इसका ट्रैफिक अगर मैनेजमेंट कनेक्टिविटी कैसे रहेगा, ट्रैफिक यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा ये अपने वाईफाई के पास जो हमारे घर के वाईफाई के राउटर है। और उसके बाद में यहाँ से जो हमारा घर के वाईफाई का राउटर का आईपी हो वो एज ए सोर्स यूज होगा, फॉर एग्जांपल 192.168.1.1। और डेस्टिनेशन में जो भी आप एक्सेस करोगे इंटरनेट पर, फॉर एग्जांपल 8.8.8.8.8.8, इस तरह से कनेक्टिविटी है। इन शॉर्ट अगर बता दूं आपको तो। ठीक है, लेट मी इरेज इट। ओके। सो अब यहाँ आते हैं हम लोग, हार्ड ड्राइव इज क्रिएटेड। ओके। उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है, यहाँ पर हमने लैब क्रिएट कर लिया, नोड ऐड कर लिया, एंड उसके बाद में हमें इंस्टॉल का फॉलो इंस्टॉल स्टेप्स उन कंसोल एंड कंप्लीट चेक पॉइंट सोल्यूशन शट डाउन चेक पॉइंट इमेज, एंड देन वी विल कमिट इट। ओके। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट इट। स्टार्ट। जब इंस्टॉल होगा तो हम इसको पॉज करेंगे सो दैट इट विल नॉट लॉन्ग।
by default, just 1 minute. Yes, yes, correct. बाय डिफॉल्ट मैंने इसको सिक्योर स्टैटिक ओपन करने के लिए करके रखा है, सो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन VNC में ही होगा, अदरवाइज विल नॉट वर्क. Close this. Meanwhile, I'm just preparing this one. Follow install a step. That is fine. We are doing this one, and then we need to commit it. For that, we need to select this option. Just copy this and we'll arrange it. So come here. Yeah, I said yeah. Hybrid. So once installation is done, then we need to commit it. So there is a step to commit, like we need to know take some detail from the EVNG. For example, this is the lab UIDD, this one. So how you can find it? First, let me proceed this, then we'll see. So I'm password, I'm just keeping admin123, admin123. That is fine. It's fine. IP management IP I am keeping 192.168.137.25. This is my management subnet, and gateway is 137.1. Then enter. So it is going to be installed on the drive whatever created. Okay. Meanwhile, I'm just preparing the step number 9. So once our installation done, then we need to shut down our image, and then we need to keep this detail. इस detail को हमें find करना पड़ेगा. So this is the same, like ये CDOP unit lab temp, that is fine, ये same रहेगा. ये हमें कहाँ से मिलेगा? This is the lab UIDD. So इसको आने का यहाँ पर VNG में, and then lab detail, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है. कॉपी पेस्ट कर लिया हमने. दिस इज द नोड आईडी. नोड आईडी इज बेसिकली, जैसे कि हमने यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, CP1 दिख रहा है. दिस इज आवर नोड आईडी. एंड पोर्ट इज बाय डिफॉल्ट 0 होता है, बट विल क्रॉस चेक अगेन. सो दिस इज द 1, and port we can only cross check once we'll shut down, otherwise it will we can't close this lab. तो लैब को क्लोज करने के लिए पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा, देन वी कैन क्लोज द लैब, अदरवाइज इट विल नॉट क्लोज. So that part we'll see once it will done. So it's 65% completed. And make sure, like first time when you are
doing installation on this firewall, so it should be in VNC mode, not in telnet. Console should be in VNC. Otherwise, we can configure it, but it is recommended to go with VNC. I think it will mention here also. So when you are adding a node on topology, please set the VNC console for your new image. VNC console is required to complete installation from ISO. Later we will able to use telnet console to the node. So first time आपको VNC console use करना है. Later we can use telnet once your installation has been done and commit has been done. So this is the highly recommended step. And thank Purushottam for reminding me. Actually, this was in my mind, but I was just checking like uh, which thing happening in Secure CRT. Yep. So 92% complete. Checkpoint installation is little bit easy, but if you do like server installation like Windows Server 2016 or EVNG use, it will take much time, a little bit much a step. But checkpoint and Palo Alto step is very easy and short, we can say. Only we need to take care this part, commit part. Otherwise, we'll stuck. Our image will not work. So we need to only take care. Once installation done, then we need to commit it properly. Okay. So checkpoint software blades, that is fine. It will take like 2, 3, 4 minutes more. So Prem, basically this step is like if you want to install our your checkpoint image. For example, we have download. We need to first download. Meanwhile, I'm just giving little bit you know brush up for you. So first we need to download the image from checkpoint site r81.10. It is very simple to download. Just type here like download r81.10. Or you can type like download checkpoint r81.10. We need to first download, and then once we download it, then we need to. But we should like already your lab should be ready, like EVNG should be installed. So that is the different things. But I'm just giving overview, and then we need to log in your EVNG through CLI, and then we need to create directory. We can select create folder in this path. This is the path, and this is the folder name. The name should be like this. Otherwise, it will not work. Name should be like this. This is the mandatory. Here we can put anything. Then we need to go on that path, and then we need to copy your image, whatever you have downloaded from download folder to the this path. Okay. Okay. Now it will, This is for go for reboot. standalone. This is for checkpoint. And then once your image copy from download to the this path of EVNG, then we need to rename your image from whatever the name is. From we need to rename from this to the cd-rom.iso. It is mandatory. And then for this image, we need to create one hard disk for example for 80 GB. It is not mandatory 80 GB. We can keep more also, but it depends. Like this is lab environment, so 80 GB is fine. And then we need to create your lab, and then follow the installation process. While creating lab, we need to take your firewall, connect your management interface to management cloud. This is connected to our home Wi-Fi router. In short, अगर मैं बता दूं तो that is fine. We don't need to upgrade this meeting. It will finish in 10 minutes. Only few things are remaining. So it is rebooting.
So this is not for checkpoint. Okay, if you want to create anything, any device, any vendor, we just need to go on the documentation, how to create, go on the EVNG side, documentation, how to create. This is for checkpoint, this is for Cisco SA firewall, for example, Citrix, F5 IP, 1480 images, force point firewall. So every firewall, every vendor has a step like how we can download and install your image for EVNG use. Okay. Okay. Okay, so it is done. So we don't need to do anything at the moment. Okay, just we need to just our installation step has been done, and then shut down the image. I'm just doing the shutdown, stop, and then close the lab system. For here user management, by default port is 0. Okay, and as per this document, we need to, for commit, we need to run this command. So we have already done lab. I know I have already copied lab UIDD node is. I just need to put here 0. Sorry, port ID. So already it is 0. So just copy it. Go on the your EVNG. You need to go on the default path. Not OPT. Okay, run here. Hit enter. And then we need to commit with the help of this command. Just copy this command. And we need to observe here. Just if you refresh it, see this hard disk size is, we can select, this is the name, and we have created hard disk for this name we can say in short. इसी नेम से हमने हार्ड डिस्क क्रिएट किया फॉर 80 GB पे. तो वाट एवर ये cdrom.iso इमेजेस था नो, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट हियर. तो इसमें आकर के वो 100% कमिट हो जाएगा अगर ऐसा इसका फ्लो रहता है. सो नाउ इट इज कमिटेड. टोटल साइज इज दिस वन. अगर आप यहाँ आकर देखोगे तो इमेज कमिटेड. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देन जो भी हमारा ये जो हमने ये जो पड़ा है cd-rom.iso, इसको हमें रिमूव करना रहता है. सो फॉर दैट हम इस पार्टीशन में जाएंगे, सॉरी इस पाथ में जाएंगे. दिस इज द पाथ जहाँ पर हमने इमेज को कॉपी करके रखा है इंस्टॉल करके. पाथ में जाने का एंड देन जस्ट रन दिस कमांड, remove space minus save cd-rom.iso. एंड अगर आप यहाँ रिफ्रेश करोगे तो नाउ cd-rom.iso यहाँ से रिमूव हो गया. एंड दिस इज आवर एक्चुअल हार्ड डिस्क जहाँ पर हमारा एक्चुअल चेक पॉइंट का इमेज इंस्टॉल है. लास्ट स्टेप क्या करना रहता है? फिक्स परमिशन एक कमांड होता है. वी नीड टू रन दिस फिक्स परमिशन. जस्ट हिट इंटर. That's it. So this is the step, guys, to install our checkpoint firewall image, ISO image for EVNG. And if you come here, checkpoint, open, just edit. And at the moment console, we can select telnet, start, just start it. You can increase the size also, session. It will take some time. Otherwise, let me do just 1 minute, stop it.
and change it VNC start। और गोइंग फॉरवर्ड इस इमेज को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको बार बार अब इस स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं, बार बार इस स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं। वी हैव ऑलरेडी डन एंड वी हैव कमिटेड इट। अब आप जितने भी लैब क्रिएट करोगे चेक पॉइंट के, ये इमेज आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स इट। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है।